Good morning students, welcome to Commerce Canput Odisha. Today we'll start with the remaining part of the first chapter and this is the last part of the first chapter. आमे कली देखिथिलु basic meaning of the classification of auditing. माने auditing जहाँ भी अच्छी हैला सेटा केते प्रकार रे क्लासिफाई हेची सेटा आमे देखिलु. केते प्रकार रे हेची? चारि प्रकार रे. 1 2 3 4 5 9 पांच प्रकार रे हेची. मिस्टर राजन कोड़ी छाड़ देलो गोटे फर्स्ट चार्ट देखी कह देलो हो सो फिफ्थ वन कौन कह मैं क्या जॉब छोड़ दूं बुझला ना. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग रो मु अगेन कह दोची को प्रकार क्वेश्चंस आसुची. एक्चुअली ऑडिटिंग इज नॉट दैट फनी तमन जति हसच हला. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग रो टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आसी परिबो मु कहि देची. जनरली से डायरेक्ट पचारिबो कि describe the organizational structure wise classification of auditing. This can be the first question. माने तुमको ए जो ना जा दिया है से प्रकार पचारिबो तमे से तीनटा लेखिबार अछि. तापर से पचारियो कोन गोटे गोटे ऑडिटर माने फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरी ऑडिट टा एक्सप्लेन करिया पई किमा फोरेंसिक ऑडिट टा एक्सप्लेन करिया पई से सब जिंस से पचारिबो. तो आमे काली बेसिक मीनिंग टा देखिथिलु एंड तार डिटेल एक्सप्लेनेशन ना आज आमे देखिबो. तो जेहेतु बेसिक मीनिंग टा बेसी जणा देखि ना हांती तो आई एम रिपीटिंग अगेन एज अ रिवीजन. तो फर्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट अंडर है. द फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट हैला. ऑर्गेनाइजेशन भितरे केते प्रकार ऑडिट हेई पारिबो से कहूची. फर्स्ट थिंग इज इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट के करिबो ना इट इज कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू असेस इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑपरेशंस. कहिची प्रोजेक्ट वर्क जेतळको दिया अछि आमे एक्सटर्नल को सबमिट करिया आगरे इंटरनली आमे गुड थरे चेक करछु ना नै माने आमे चेक करछु हमर सांग को देउछु हमर सीनियर मेंबर मानन को दोछु. तो दे आर आल्सो स्टूडेंट्स बट एक्सटर्नल नाही बुझिला ना नै. तो इंटरनल ऑडिट होची कंडक्टेड बाय एम्प्लॉइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू असेस इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑपरेशंस. इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ ऑपरेशंस माने रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशंस बिसरे जहां भी अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस करिया पई इंटरनल ऑडिट होची. एक्सटर्नल ऑडिट माने कोन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट external auditors to ensure financial statements fairness and compliance with the regulation. External audit माने कोन जे भी ऑडिटर माने अछंदी से ऑडिटर माने कोन करी आसी की देखिए कि ए कंपनी केते की लीगली सब फॉलो करची ता ऑपरेशन गुडा केते ठीक ठाक अछि आ तार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स केते ठीक माने व्यू दोचंदी से सब जिंस के देखिबो एक्सटर्नल ऑडिटर्स देखिबे. तापर आसे हमर गवर्नमेंट ऑडिट. गवर्नमेंट ऑडिट माने होची गवर्नमेंट जेतळ को प्रेस्क्राइब करूची अलगा अलगा लोकान को माने गवर्नमेंट स्पेशली अपॉइंट करची केते लोकान को जाय कि गोटे कंपनी रे चेक करिया पई बुझला. तो गवर्नमेंट जदी प्रेस्क्राइब करूची तो सेडा दीडा केस रे ही पारिबो. फर्स्ट थिंग होची जदी गवर्नमेंट किछि कॉन्ट्रैक्ट दोची गोटे कंपनी को से पूरा डिटेल जानिबा को चाहियो कि से कंपनी माने जेन्युइन कंपनी ना नाही सेतळ को से कोन गवर्नमेंट ऑडिट करै पारिबो. नहले तो कोन सेकंड चांस हो सेकंड केस होची जेतळ किछि फ्रॉड बाहर करला माने किछि फ्रॉड बाहरिला से कंपनी रो तो गवर्नमेंट कोन करबो ना से मानो को गोटे स्पेशल टीम पठै गिरी एसेस करबा को कहबो कि से पर्टिकुलर कंपनी रे सतरे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होची कि सब ठीक ठाक अछि ना नै सेडा हैला. तापर प्रोप्राइटरी ऑडिट. प्रोप्राइटरी ऑडिट रे कोन होची फोकसेस ऑन द मैनेजमेंट्स डिसीजन एंड वेदर द फंड्स आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस. से कोन कहूची ना मैनेजमेंट रो डिसीजन मेकिंग माने जदि मैनेजमेंट रो कैपिटल 1 लाख इन्वेस्टमेंट करिछि तो से 1 लाख ता से केमिति यूज करछि मैनेजर माने को डिसीजन मेकिंग ना ठीक से करिचंदी ना नै डिविडेंड वगैरह ठीक से देइचंदी ना नै आ मैनेजर्स जे भी अछंदी से माने एम्प्लॉइज को केमिति ट्रीट करचंदी ए सब जिंस तांके देखिया कोडा रे प्रोप्राइटरी ऑडिट रे. प्रोप्राइटर माने के ओनर ओनर रो ऑडिट होछि. ओनर ऑडिट माने मैनेजर रो ऑडिट होछि. तो मैनेजर रो ऑडिट हेबार मीनिंग कोन ना मैनेजर रो डिसीजन मेकिंग रे से कोन डिटेल्ड एनालिसिस करूछ हैला. तापर आसे हमर स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट माने कोन ना लॉ ठीक से फॉलो होछि ना नै सेडा से देखिबो लीगल प्रोविजन गुडा को ठीक से फॉलो होछि ना नै देखिबो. नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट माने कोन वॉलंटरी ऑडिट्स कंडक्टेड बाय द एंटिटी माने निजर ब्रांड इमेज ता इंप्रूव करिया पय जदी कंपनी ता किछि ऑडिट करोछि दरकार नथिले भी एप्लीकेबल नथिले भी से कोन ऑडिट करोछि तो ऑडिटर जदी आसी कि किछि रिपोर्ट दोछि तो रिपोर्ट देला अलगो कोन होछि ना रिपोर्ट देला अलगो लोकानगर कोन ब्रांड इमेज और गुडविल टा बढुछि से कंपनी प्रति विश्वास टा बढुछि.
टैक्स ऑडिट माने कौन ना टू एनश्योर कंप्लायंस विथ द टैक्स लॉस टैक्स प्रोविजन गुडाक ठीक से फॉलो होची ना नहीं से देखिबो परफॉर्मेंस ऑडिट रे कौन होची ना इवैल्यूएट्स द इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन माने जो जो ऑपरेशंस होची रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशंस होची से जिनसर केतिकी एफिशिएंसी अच्छी माने वर्कर माने किमिति काम करचंदी केतिकी एफिशिएंसी रे काम करचंदी से सब जिनस कोन असेसमेंट हबो फोरेंसिक ऑडिट जोड़ा कि नुआ रे इंट्रोड्यूस हेची इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड फाइनेंशियल इरेगुलारिटीज माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करियर जति किछि इरेगुलारिटी होची से मासे रिपोर्ट करियर अछि बट से 3 मास गुडथरे रिपोर्ट करूची तो एडारे किछि ना किछि गुटे फ्रॉड इन्वॉल्व हिची कहिगिरी ऑडिटर कोन करियो इन डिटेल चेक करिवो क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेक्स्ट करि परिबो जदी को जिंसो लाइक मिक्सअप हे होची कि स्पीड होची एजा ऑलरेडी काले डिस्कस हे जेची रिपीट करिया कोइची तो कहूची प्लीज कंफर्म ओके फाइन ओके तो देखो पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट रे कौन होची रे कंटिन्यूअस ऑडिट माने थ्रू आउट द ईयर होची पीरियोडिक और एनुअल ऑडिट माने कौन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रे होची जोड़ा कि पूरा फाइनेंशियल ईयर रो डाटा को कौन इवैल्यूएट करूची बुझिला तापर इंटरिम ऑडिट माने कौन दीडा एनुअल ऑडिट भितरे होची जहां भी सेडा होची कौन हमरा इंटरिम ऑडिट आ बैलेंस शीट ऑडिट माने कौन खाली बैलेंस शीट रो जेतिकी भी आइटम्स अच्छी लायबिलिटीज एंड एसेट्स जहां भी अच्छी से जिंस रो कौन असेसमेंट होची बुझिला एडा मु वन लाइनर सब देछि डिटेल दा पर बुझेबी कंप्लीट ऑडिट माने कौन कंपनी रो एंटायर फाइनेंशियल रिकॉर्ड गुडागो ऑपरेशन गुडागो कौन ऑडिट हबो सब जागो ए टू जेड सब ऑपरेशंस इंपोर्टेंट हो नॉन इंपोर्टेंट हो सब जिंस जा कौन असेसमेंट करिवे पार्शियल ऑडिट माने खाली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को आगे से कौन करियो फोकस करियो खाली मार्केटिंग डिपार्टमेंट खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खाली सेल्स डिपार्टमेंट एमबी से माने कौन फोकस करियो डिटेल्ड ऑडिट माने कौन इन्वॉल्व्स अ डीप एंड कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस माने गुटे जिंस अचीव करिया पई जो जो प्रोसेस अच्छी रिकॉर्ड्स अच्छी से सब जिंस रो मध्ये कौन ऑडिट हबो जनरल ऑडिट माने कौन इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल रिव्यू विदाउट फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एरियाज किछि स्पेसिफिक एरियाज को फोकस न करी कौन हाई लेवल रिव्यू दबसी माने जदि हाई लेवल रिव्यू देबार अछि तो खाली गुटे दिडा जिंस देखिले हबनी सबुजा जिंस रो कौन स्पेसिफिक एरियाज बाहर करियार अछि माने जदि मार्केटिंग अच्छी परचेज अच्छी सेल्स अच्छी प्रोडक्शन अच्छी तो सबु जगह सबु जगह इंपोर्टेंट नथिबो किछि स्पेसिफिक पार्ट थिबो जोडा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिबो जेमति कि परचेज डिपार्टमेंट रे सबुडे इंपोर्टेंट कोन हो भाबुचो तमे परचेज डिपार्टमेंट रे सबुडे इंपोर्टेंट कोन भाबुचो परचेज ऑफ व्हाट वेरी गुड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होची सबुडे इंपोर्टेंट काहेगी रॉ मटेरियल रागा सब जिंस स्टार्ट होची बुझिला ना नहीं तो परचेज डिपार्टमेंट रो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज द स्पेसिफिक एरिया देयर बुझिला ना नहीं सो एडा होची जनरल ऑडिट देन से कोची फाइनेंशियल ऑडिट माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रो एक्यूरेसी और कंप्लायंस टा बुझेबा कॉस्ट ऑडिट माने होची कॉस्ट रिकॉर्ड्स गुडा को देखिबो एनालिसिस करिवो मैनेजमेंट ऑडिट रे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को बुझेबो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस माने कोन को प्रकार पॉलिसी से माने अडॉप्ट करचंदी सैलरी पेमेंट रो कोन पॉलिसी अडॉप्ट करचंदी डिविडेंड पेमेंट रो कोन पॉलिसी अडॉप्ट करचंदी हाइक केमती दोचंदी प्रमोशन केमती दोचंदी से सब जिंस रो कोन ऑडिट हबो देन ऑपरेशनल ऑडिट इज असेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशनल प्रोसेसेस ऑपरेशनल प्रोसेसेस रो मीनिंग बुझो ऑपरेशनल प्रोसेसेस रो मीनिंग होची activities responsible for generating कौन revenue activities responsible for generating revenue एडा होची कौन हमर ऑपरेशनल प्रोसेसेस तो ए पर्टिकुलर जिंसर इफेक्टिवनेस आ एफिशिएंसी दीडा जे जिंस को अंडर आसीबो ऑपरेशनल ऑडिट अंडर रे आसी एनवायरमेंटल ऑडिट और आईटी ऑडिट ता मु कहिछि नुआ रे इंट्रोड्यूस हेछि
एनवायरमेंटल ऑडिट रे कौन हबो ना से एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस को केते प्रमोट करछि केते फॉलो करूछि पोल्यूशन इराडिकेशन पे से कौन कौन करूछि सब जिंस जाग से अंडर रे आसीबो तो एनवायरमेंटल ऑडिट ता तमरा आस्थिला एटा 2019 जून रे टिके पार्ट से भितर आस्थिला बट एबे एडा नुआ रे माने कौन ना एक्स्ट्रा ऐड करछि एनवायरमेंटल ऑडिट टा गोटे प्रोसीजर हिसाब रे माने ए टोटल सब्जेक्ट मैटर वाइज क्लासिफिकेशन रे गोटे बस तार इंट्रोडक्शन पार्ट टा थिला बट एबे कौन वर्तमान को एडा पूरा पूरी गोटे टॉपिक करिछि आईटी ऑडिट माने देखो आईटी ऑडिट फोकस ऑन द रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी मु कली कहिथिली कि सैप जहाँ भी अच्छी सैप सॉफ्टवेयर जहाँ भी अच्छी से सैप सॉफ्टवेयर कौन सब जगह यूज होची ए टू जेड सब कंपनीज रे यूज होची आजिकली तो से सैप सॉफ्टवेयर जदी किछि कॉम्प्रोमाइज टेक्नोलॉजी सहित हेची माने से टेक्नोलॉजी एते स्ट्रांग नै इजीली लीक हे जिवो इन्फॉर्मेशन टा तो से केस रे कौन हबो ना से सैप टेक्नोलॉजी रे मध्ये कौन हबो ऑडिट टा दरकार बुझिला दिस इज आईटी ऑडिट बुझुची ना नहीं ओके फाइन एडा रहला हमर बेसिक इंट्रोडक्शन आज रो टॉपिक टा एड रो स्टार्ट हबो हमर लिमिटेड रिव्यू As per clause 33 of the SEBI regulations 2015, a company shall submit its quarterly, yearly, year to the date and annual financial results to the stock exchange in the manner prescribed in the clause. बुझुची तो एडा गुटे नुआ इंट्रोडक्शन वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हला मु अलगा रे देछि ना से कहूची कोन एज पर क्लॉज 33 ऑफ द सेबी रेगुलेशंस सेबी माने कोन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी किछि गुटे रूल करिछि ऑडिट हिसाब रे ऑडिट को धरि गिरी से कहूची अ कंपनी शैल सबमिट इट्स क्वार्टरली ईयर टू द डेट एंड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स माने सेबी द्वारा किछि जदी कंपनी अट्रैक्ट हेछि माने सेबी अंडर किछि रजिस्टर हेछि तो those companies are required to submit their quarterly audit report year to the date audit report माने to the date जो year माने to the date जहाँ भी से prescribe करछि सेडा and annual financial results माने होछि कोन overall year रे तार profit हेछि ना overall year रे तार loss हेछि annual financial results तीनटा जे जिंस कोन stock exchange को submit करियर अछि in the prescribed manner ए पर्टिकुलर क्लॉज रे सेटा प्रिस्क्राइब हिची से हिसाब रे ताकू सबमिट करबा को पड़िबो तो कंपलसरीली यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस बिट क्वेश्चन रे भी से पचरले पचारिबो काई गेले नुवा अमेंड हेची बहुत जण मिस कर दे बेडा अकॉर्डिंगली अ कंपनी हैज एन ऑप्शन टू सबमिट ऑडिटेड a company has to submit audited or unaudited quarterly and year to the date financial results to the stock exchange within 45 days from the end of each quarter other than the last quarter बुझला तो से कौन कहछि देखो से क्लॉज रे जहां भी कहछि माने क्लॉज 33 कौन कहछि से सेबी listed नहीं सेबी listed तो हबो नहीं सेबी prescribed companies required to submit three things कौन से कहि छी फर्स्ट थिंग होची क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट quarterly audit report year to the date audit report year to the date audit report how annual financial results annual financial results एडा तो कीवर्ड्स एडा पक्का लिखिबार अछि बट तार मीनिंग तळे लेख
क्वार्टर माने केते ईयर रे केतेटा क्वार्टर्स थाउचंदी तीनटा तीनटा ना चारटा तीनटा ना चारटा पक्का गोटे क्वार्टर माने केते मंथ्स 3 मंथ्स आ कौन पे कंफ्यूज हो जा हेले केतेटा क्वार्टर अछंदी ईयर रे पक्का तो हैला तो केतेटा ऑडिट रिपोर्ट जिवो सेबी को 4 ऑडिट रिपोर्ट्स हैला मोडा कोन पे लिखोची ना एडा बिट क्वेश्चंस रे आसिले एमिति आसीबो इंक सरी एछि ना कोन एडार आउडे पेन यूज करी कोन सरी एछि लेड सरी एछि 4 ऑडिट रिपोर्ट्स ए देखो क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट्स केतेटा जिवो सेबी को चारटा बुझिला ना डैश एज पर क्लॉज 32 केतेटा जिवो कहि कि से माने क्वेश्चन पचरी पारिबो ईयर टू द डेट ऑडिट रिपोर्ट माने कोन ईयर टू द डेट ऑडिट रिपोर्ट माने होची ऑडिट रिपोर्ट एज पर बैलेंस शीट डेट ऑडिट रिपोर्ट एज पर बैलेंस शीट डेट ईयर टू द डेट ऑडिट रिपोर्ट माने कोन ऑडिट रिपोर्ट एज पर बैलेंस शीट डेट तो एटा भी बिट क्वेश्चंस रे आसीबो ईयर टू द डेट ऑडिट रिपोर्ट कैन बी बेटर डिस्क्राइब्ड एज डैश ऑडिट रिपोर्ट एज पर बैलेंस शीट डेट तो जेतलो से क्लॉज 33 कहि दबो ना सेटा देखि अधा पिला बाया हे जिवे कि काहेंगी गुटे क्लॉज की सेक्शन नंबर जेतलो पचाची यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आ गुटे एक्स्ट्रा वर्ड भी तमे लिखि पारियोनी जहां भी सेडी मेंशन हेछि सेडागा लिखिबो सेति पे मु रिपीटेडली कहि थाउची कोन लॉ रे अनलेस एंड अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट यू कांट कोट एनी सेक्शन नंबर्स केबे पक्केबोनी आगा सेक्शन नंबर जदि सेटे पक्के दउचो तो तमे प्रोविजन न लिखिले भी पर्टिकुलरली से सेक्शन आगा एप्लीकेबल हबो ऑडिट रे हो लॉ रे हो बुझिला ना ताड भलो कोन प्रोविजन ता तमे एक्सप्लेन कर दियो तो जेतरो सेटा बिट क्वेश्चन रे से पचार दउची कि एज पर क्लॉज 32 डैश एंड डैश कहिकरी तो तमे कोन से पर्टिकुलर क्लॉज रे जहां भी अछि सेडा आगा लिखिया आ डाबा डाबा किछि मार परियन बुझिला ना नहीं से डाबा मारिया कथा कोडी बीकॉम रे गुटे लाइन भल लिखि बाकी सब कोन डाबा मार लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्टडी फॉर बीकॉम एग्जाम्स से डाबा मारिया आम हला तापरे एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स माने कोन एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स माने ओवरऑल years profit or loss determination overall years profit or loss determination जदि वॉइस क्लियर ना कि किछि नै टिके कंफर्म करो मे बी टिके ब्रेक होउची मु जाननी प्लीज कंफर्म तापरे देखो under most of these circumstances the auditor finds little time to conduct thorough examination of the books and other supporting documents. Moreover, it may also not be possible for the client to balance books and provide all documentary evidences. So instead of conducting a full-fledged audit, the auditor has to make restricted study of the books and other documents. This system of review is called the limited review. It's a very important point. Limited review रा meaning कौन? तो एडा रे तमरा क्वेश्चन आसीबो ध्यान देगी सुनो सबो explain limited review as per clause 33 of SEBI. दमशरस खेल जा आगे 4 मार्क्स फाइन क्लियर अच्छी थैंक यू एडा नुआ टॉपिक टा चपड़ा पकी दिन सुनले ठीक से वेलकम
Under most of these circumstances, generally limited review रो meaning कौन? Limited review माने होची कौन? Normally इमती thorough examination न करिगिरी खाली टिके evidence base रे जहाँ भी टिके ऊपर ऊपर रे देखियो. Under most of these circumstances, the auditor finds little time to conduct thorough examination. जेतु तार time डा बहुत limited रहुची, तो से कौन thorough examination डा करी पारिबोनी. Of books and other supporting documents. कोडा कोडा रो ना books और supporting documents रो. Books और evidences match करी पारिबोनी. Moreover, it will not be possible for the client to balance books and provide all documentary evidences. The first रे कौन आमे दीटा disadvantage discuss कर लो. Auditor कौन करियो? Auditor पाखरे भी time नथियो, मे भी से provide करी पार नथिबो. किंबा कौन जो client अच्छी से client मध्य कौन books balance करी पार नथियो, documentary evidence मध्य कौन सबुजा provide करी पार नथिबो. तो से लगी कौन सो इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग अ फुल फ्लेज्ड ऑडिट इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग अ कौन फुल फ्लेज्ड ऑडिट थरो ऑडिट द ऑडिटर हैज टू मेक रेस्ट्रिक्टेड स्टडी ऑफ द बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड स्टडी माने कौन टिके लिमिट करिवो हला जदी एग्जाम को हमर टाइम नै हला तमे कोन करे किछि टॉपिक स्किप करिबा बुझिला ना नै स्किप करिया कोन सेटा तो बाध्य टाइम थिले हम स्किप करता लिमिटेड रिव्यू दिस सिस्टम ऑफ रिव्यू इज कॉल्ड द लिमिटेड रिव्यू बुझिला as it is इम्तिया का लिखियो पड़ियो this is the clause definition of SEBI. It is to be noted that in case of limited review generally accepted auditing standards are not followed. Very important point bit questions रे भी आसीबो very important mark कर limited review रे कौन से follow करूनी कोडे ले सुनचो auditing standards न follow करी करी audit हेबाडा but से clause रे से provide करूची हैला जदी टाइम नाही तो तुमको जिमिति ठीक लागिला as sufficient to you सिमती करिवो नाइ इमिति नाइ कि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टा फॉलो आगा करियर अछि कहि बुझिला ना नै क्लियर सो द स्कोप ऑफ लिमिटेड रिव्यू इज सब्सटेंशियली नैरोअर एडा गोटे बिट क्वेश्चन एथिरे एज कंपेयर्ड टू एन ऑडिट बुझिला ना नै तीडा पॉइंट से कहला लिमिटेड रिव्यू काउ बुझिला नेली कहले को वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लिमिटेड रिव्यू आ ये रे क्वेश्चन डा आसीबो बिट क्वेश्चन तो आसियो लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी पारे बुझिला समस्त एडी राजन सुजल रितेश वर्षा स्नेहा सुहाना मेघना क्लियर ओके एडा रेबे कीवर्ड डिस्कशन हबो देखो आमे ऑडिट रो मेन बेसिक मीनिंग दा देखिजो बट एजा सब कोन ना पास्ट एग्जाम रे स्कैनर रे जिमती पचारची सेमिति आमे डिस्कस करछु डिटेल डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट द फर्स्ट वन इज कंप्लीट ऑडिट कंप्लीट ऑडिट भितरे मु जिमती कहबी सिमती पॉइंट्स लिखिबो सेडा का तमरो कीवर्ड्स नोट रे लिखियार अछि नले पूरा हजि जिवो एत्ते जागो पाठ पढला भितर a complete audit is an audit where the scope of audit is not confined to specific limits first thing कोन एटा scope of audit is not limited लिखिबो scope of audit is not limited काहेंगे not confined to specific limits लिखाई छी तो सेडा रो इजी लैंग्वेज होची not limited बट से कीवर्ड त तमे किने मिस करिबन सेडा पे मो पाखा लिखुछ a complete audit is an audit where the scope of audit is not confined माने not restricted to specific limits किछि भी लिमिटेशन नाही तारो कंप्लीट से करि परिबो which may be set by the management or any authority बुझला ना मैनेजमेंट किबा अथॉरिटी के लेले सेट करि परिबो The auditor is required to check all the possible aspects of a business, including manufacturing operations, data flow process, accounting record, and procedures. In general business practices, it is not feasible to get a complete audit conducted. It lekhibo kona generally it is not possible in case of all businesses. In case of all businesses. Akona complete audit of all important aspects. Complete audit of all important aspects. ए तीनटा जा पॉइंट कंपलसरी रयार अछि गोटे गोटे मु जहां भी डिस्कस करछि सेडा 5 मार्क्स पे आसुछि
तो माने चेक करि परिबो जोटा कि तमे केबेले करूनो मुआ कहि दोची कोड एलएलए भितर आसीबो 5 मार्क्स पे आसीबो आडू बाहर किछि आसियन पार्शियल ऑडिट माने कोन फर्स्ट कीवर्ड इज नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट माने नॉट कंपल्सरी एज पर लॉ not compulsory as per law. A partial audit is a non-statutory audit which restricts the scope of auditor to checking of certain specific aspects only. Only certain aspects selected are examined. से स्पेसिफिक एस्पेक्ट जाको से इमितरे कहि दबनी को बिजनेस को एस्पेक्ट स्पेसिफिक रहइबो मु काली गोटे एग्जांपल देइथिली काली की तागो क्लास रे दीडा जे थिबो जनरली गोटे क्लॉथ इंडस्ट्री गोटे कॉटन इंडस्ट्री तो क्लॉथ इंडस्ट्री रे मे बी कॉटन रो परचेस हमें एते स्पेसिफिकली एग्जामिन करियानी बट जे कॉटन इंडस्ट्री रो कॉटन जहा भी परचेस अछि सेटा तो इन डिटेल एग्जामिन करिबार अछि काहेकि सेटा होची मटेरियल फॉर दैट कंपनी ओके The auditor's powers to inquiry are restricted by his terms of engagement. This is an important point. So directly bit question भी हे पारिबो. तो auditors ର power केते को restrict हे अछि? Auditors scope or power is limited to his terms of engagement. Terms of engagement ର meaning कोन कहिथिनि मु? What do you mean by terms of engagement? सोई पड़थिला ना कोन रे? Not exactly. केति की पीरियड नै. केति की पीरियड भी अच्छी बट ताडो अधिक आ किछि अच्छी सेथरे. Terms of engagement रे. Online students you can respond. Okay Deepik कोडा को last 3 lines पछाच तमे. वेरी गुड तो माने से कहि देथियो कि तू केति की करि पारिबो तू केति दिन आसी पारु को बुक्स तू देखि पारु को रूम तू चेक करि पारु से सब जिंस हैला लिमिटेड रिव्यू रो फाइन लिमिटेड रिव्यू रो डाउट अछि तो लिमिटेड रिव्यू रो लास्ट पॉइंट होची कि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जहां भी अछि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स माने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग सिंपली कहर अछि कहले सेटा फॉलो न करिले भी चलिबो इमति नै कि से मना करछ तो मोर टाइम थिले मु फॉलो करि नेली नै से कहूँ कौन जेहेतु टाइम ना तो यू कैन स्किप फॉलोइंग दो स्टैंडर्ड्स ओके he may not be allowed to obtain information which falls outside the purview of the scope defined for him तो जहाँ भी तारो स्कोप बाहर अच्छी तारो किछि भी इंफॉर्मेशन मिलेबोनी no information beyond the mentioned scope shall be provided किछि भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हबोनी जेति की ताको कोआइछि सेति की आका ओके जेति की इंफॉर्मेशन ताको प्रोवाइड होछि सेति की इंफॉर्मेशन आका ताको मिलेबो ताडो अधिक किछि हेले मिलेबोनी example an auditor may be appointed to check the accuracy of recording transactions relating to cash sales or he may be appointed to conduct an audit for the month of Diwali only हैला जदि मनर पार्शियल ऑडिट 5 मार्क्स में पचार दोछि तो किछि ना किछि गोटे एग्जांपल हम कोड करियो पड़ियो ना मु गोटे एग्जांपल फ्रेम करके देखि देली तुमको कि एमती हे पारियो है किछि डाउट अछि कारो सुनछो सब अधा निदरे सुनछो ना कोन पूरा निदरे सुनछो पार्शियल ऑडिट पार्शियल निद नो निद एबे डिटेल्ड ऑडिट इज आल्सो नोन एज ऑडिट इन डेप्थ एडा गोटे डेप्थ नै डेप्थ सॉरी ऑडिट इन डेप्थ it involves checking of transactions from the time of their recording till their final effect on the financial statements. Every stage that a transaction goes through in the accounting process closely examined by the auditor using various audit evidences. तो एटा कोन डिटेल्ड ऑडिट रे बहुत कीवर्ड्स अछि देखो से कहछ कोन recording process रो
recording to reporting, recording to uploading नहीं, recording to reporting है recording to reporting जाई सबो जागो process, all the processes involved. तुम कौन करছো लिखुଛ ना नहीं बाहागर फोटो पूरा देखला बेला खुशी होचो कौन सेठी कौन करছো कौन इन जिनस करले कौन पाप लगे मु कहिना कंपनीज एक्ट कौन कहूछ शुण जदि गोटे पिंपुटीटा इनती थिबो ताको इनती गोल बुले तमे कंफ्यूज करियो कहले शुण ए एग्जाम रे तुम आसिया क्वेश्चन डाउ टाइम हबनी एडा ए पाप लागियो कहि दोछ एडा मु कहनी कंपनीज एक्ट कहूछ बेकरिया मनीष ए all processes are closely examined. All processes are closely examined. Code ro recording ro reporting jai. थ्री जागो बुझला चुड़ेल जागो सेतिबे मते कहउछ काली रो क्लास कर कहिरि नै तमे स्त्री जागो बट मते कहउछ नहीं कलाना ओ पुरुष कलाना ओ स्त्री कलाना कहउछ कि अच्छा तापर देखो कॉस्ट ऑडिट रे कौन देखिबो कॉस्ट अकाउंटिंग देखिबो कॉस्ट बुक्स कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट स्टेटमेंट्स subsidiary and prime documents माने totally examination of cost records examination of cost records with a view to satisfying the auditor that these represent true and fair view of the cost of production तो एटा कोन examination of cost records with the objective of determining the fairness of cost statements Hi do Cost Accountants of India on the other hand defines cost audit देखो ए डेफिनेशन टा इंपोर्टेंट काहेकि आम इंस्टीट्यूट टा कहिछि फाइनली आम इंस्टीट्यूट कोन ना ओडे कहला सीए इंस्टीट्यूट तो पूरा स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर दोछ आम इंस्टीट्यूट और डेफिनेशन ओडा दोछ प्राउड टू बी अ सीएमए a system of audit introduced by the government of India for the review examination and appraisal of the cost accounting records and attendant information required to be maintained by specific industries तो cost audit माने होची कोन चारटा जिंस से कंसीडर करिवो चारटा जिंस डिटरमाइन करिवो फर्स्ट थिंग होची कोन रिव्यू करिवो रिव्यू माने देखिबो तापरे एग्जामिन करिवो एग्जामिन माने एनालिसिस करिवो अप्रेजल करिवो अप्रेजल माने गोटे स्टेटमेंट दबो केटा ठीक अछि नै अप्रेजल ऑफ cost records plus relevant information हला एटा कीवर्ड टाइडी relevant information plus whether records are maintained by prescribed industries माने आमे कॉस्ट ऑडिट रे पढ़िबा सीएमए फाइनल रे कि तुमको प्रेस्क्राइब कराइथियो कि को पर्टिकुलर कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे छी को पर्टिकुलर कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करियर नै तो कोन शाहरुख खान हेबार प्रैक्टिस करछु कहना क्या चाहते हो कुछ कुछ होता है इसीलिए तो ऑडिटर आता है Cost audit renders invaluable services to various parties connected with the business directly or indirectly. It acts as a tool of control in the hands of management, enabling it to identify the areas of inefficiency and wastage. बुझला
तो कॉस्ट ऑडिट कौन करछि ना सर्विसेज प्रोवाइड करछि जो द्वारा कोन बिजनेस को डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली किछि ना किछि गोटे बेनिफिट होछि आ कोन ना सेटा गोटे टूल ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑडिट कैन बी बेटर नोन एज अ टूल ऑफ कंट्रोल बिकॉज मैनेजमेंट कौन करछन्ती जदी किछि कॉस्ट बेसी हे होछि कि वेस्टेज जोडी बेसी होछि कॉस्ट जोडी रिडक्शन हे पारियो सब जिंस जा कोन गोटे कॉस्ट ऑडिटर प्रिस्क्राइब करे लिख लो कॉस्ट ऑडिट बुझिला ना किछि डाउट अछि कार बुझिला ना नाइ रे कौन करछु म तू एत समय 2 मिनिट काटी देखो हला बुझिला फाइन ठीक अछि थैंक यू देखो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ comprehensive and critical review of each and every aspect of the management process तो कौन comprehensive and critical review comprehensive माने कौन to the point दबो बट कौन पूरा जवाब दबो किमेती केते पिल्ला थाउ ना पूरा साइलेंट थाउ चंदे जेतोळ कहउ चंदे आ के किछि कहि पर ना थाउ चंदे बुझिला ना इन थाउ चंदे जनरली जे बेसी टिके साइलेंट रहयो से जदी को कथा कहयो तो सेडा बहुत गोटे स्ट्रांग स्टेटमेंट थिबो बुझिला तो इट्स अ comprehensive and critical review of each and every aspect of the management process it is basically a tool of management control it's basically a tool of management control hela it covers all areas of management like planning organizing coordination and control सब जा management process गुडा को cover करियो it assists managers at all levels in the effective discharge of managerial functions माने कोन मैनेजरियल फंक्शन समस्त ठीक ठाक भाव में कंडक्ट करछन ना नहीं परफॉर्म करछन नहीं सेटा से देखिबो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोबेबिलिटी एंड अटेनमेंट ऑफ अदर प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेल डायरेक्टेड मैनेजमेंट फंक्शन it acts as a guide which helps in improving the efficiency of the management तो मैनेजमेंट ऑडिट ता कहि दोछि मु जून 2017 रे 7 मार्क्स पे आसथिला ओके 7 मार्क्स पे आसथिला तो सेति पे एते बड़ हिच कोन हला कंफ्यूजन एनी डाउट सुन ले तो डाउट मैनेजमेंट ऑडिट इज अ देखो फॉरवर्ड लुकिंग independent and systematic evaluation of the activities of management for the improvement of organizational profitability number 1 objective number 2 होची attainment of other predefined objectives of organization number 3 होची well directed management function तीन जो ऑब्जेक्टिव तुमको मेंशन करबा को पड़िबो तो जदी किछि क्वेश्चन गोटे 7 मार्क्स पे आसुची तो तमे कोन करिवो बेस्ट ऑप्शन इज जदी तमे गोटे कंपनी रे काम करछ हला तुमको हाइक दरकार तमे जानछ से मैनेजर को टिके लाइक प्रेज करले से टिके हे पारे कोन तो तमे किन प्रेज करियो यू सो वेल डिफाइंड यू सो लाइक टू द पॉइंट केते इफेक्टिव केते स्ट्रांग केते ये सब कहियो ना सिंदी बेसिक डेफिनेशन लिखि देला पर से ऑडिट को तमे सिंदी प्रेज कर देले 7 मार्क्स मिल जे ठीक सेकंड कोच देखो ना या फॉरवर्ड लुकिंग या इंडिपेंडेंट या सिस्टमैटिक सब जा सिंदिया कोच तो प्रेज करला आले तमे कोन कीवर्ड गुडा को यूज करे अछि मु जोक करनी सतरे कोच आई यूज्ड टू डू दिस बट मते एबे जई सैलरी हाइक किछले मिलनी दैट्स डिफरेंट दुखमय जीवन operational audit involves examination of all operations and activities of the entity under audit the objective of operational audit includes examination of underlying control structure of the entity relation of departmental controls to general policies and its relation with the control of other departments तो operational auditor से कौन देखो जी मैं कही already examination of what type of activities examination of को activities कहली एबे हाँ नहीं ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मैं कौन कहली एबे मुझे Amazon खोलना है अब बाड़ी ऑर्डर करी हाँ
कैश ऑन डिलीवरी मात्र तुम्हारा चांदा नहीं से बाड़ी रो पैसा देमु कौन एबे तो कहली एग्जामिनेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कहली 3 दिन देखो डेलीवरी सेते जे मैं जगी पारिन मु एबे आ पिटिति तमन एबे गुडे कहिथिले अध घंटाडी तळे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेशंस माने कोन ऑपरेशंस माने डे टू डे एक्टिविटीज हला तुम जदि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढिछ सेतरे कोन थिबो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज आर नोन एज ऑपरेशनल एक्टिविटीज तो कोन ऑपरेशनल एक्टिविटीज को कोन करिया हमें टोटली एग्जामिन करिबा देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट की पॉइंट हियर एंटिटी रो कंट्रोल स्ट्रक्चर माने के कंट्रोल करछि डिसेंट्रलाइज्ड पावर ना सेंट्रलाइज्ड पावर से सब जिंस देखि पारछि आउ गोटे गोटे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट भितरे कोन कोऑर्डिनेशन टा केमिति अछि सेडा मध्ये से देखिबो एंड जनरल पॉलिसीज देखिबो कि कोन कोन से कवर करूछि कहि कि हैला it provides an appraisal whether the department is operating in conformity with the prescribed standards and procedures laid down by the management जहाँ भी कोची से हिसाब रे स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करूची ना नहीं माने से स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करला भीतर माने हिसाब रे से काम करची ना नहीं Operational audit in its initial stages was developed as a branch of internal auditing. एडा गुटे बिट क्वेश्चन हैला किमिति इवॉल्व हैला ना फर्स्ट इट वाज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग माने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रे जे भी अछि सेडा रे गुटे ब्रांच थिला Internal audit focuses on accounting operations of the entity, but operational audit has a wider scope of working and covering all other operations such as सब जगह ऑपरेशन को कवर करे प्रोडक्शन मार्केटिंग सब जगह Operational audit is one of the management tool to get first-hand information. It is more useful in an entity where the management is at distance from actual operations. को प्रकार entity पे एटा useful ना जेतोळु को कोन गुट्टे जागा रे तार ब्रांच ऑफिस ता थिबो गुट्टे जागा रे तार हेड ऑफिस ता थिबो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग रे तुम देखुछ ना से प्रकार एंटिटी पे कोन ऑपरेशनल ऑडिट ता बहुत एसेंशियल ऑपरेशनल ऑडिट ता लास्ट टिके भल से सुन दे It is very useful in large organization where management cannot control the actual operations. So usefulness ta कोडी कोडी आछि हमरो useful in branch offices or large scale offices तापरे departmental offices ए जागा जारे कोन हमरो ऑपरेशनल ऑडिट टा very essential the management information system has various tools like routine performance report from department heads internal audit reports surprise checks periodic inspections and investigation to control the managers responsible for their departments the operational audit is also one of the tools in large or geographically vast entities तो एजा सब कोन हमरो एजा सब large or geographically vast entities बुझिला to control the operation at first stage and fill up the gaps of information provided by the department heads through periodic reports ए गुट्टे जो ऑडिट अछि ऑपरेशनल ऑडिट ता very important मार्क करियो जेहेतु एडा तो लॉन्ग क्वेश्चन तो हेई पारियो बट बहुत प्रकार अलग अलग क्वेश्चंस हेई पारिबो दैट्स व्हाई मु ऑपरेशनल ऑडिट रे स्टॉप करिया चाहूची कोन सुनो फर्स्ट थिंग होची तार मीनिंग पचारि पारिबो बिट क्वेश्चंस तो कंपलसरी पचारिबो बहुत बिट क्वेश्चंस तमे देखि पारचो सबडो इंपोर्टेंट बिट क्वेश्चन होची एडा आगरे कोन थिला कोडर ब्रांच थिला आ तार वाइडर स्कोप कोडर अछि इंटरनल कंट्रोल टा ब्रॉडर स्कोप आ ऑपरेशनल टा वाइडर स्कोप सेडा गोटे एंड सेकंड थिंग होची को प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस रे ऑपरेशनल ऑडिट टा एसेंशियल एम्ति टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली तमे देखिबो आरटीपी रे बहुत थरे एम्ति क्वेश्चंस तमे देखि पारिबो ऑपरेशनल ऑडिट टाइप रे से पचारनी डायरेक्टली गोटे गोटे ऑडिट मेंशन करके से कहियो मेंशन 2 कंपनीज इन व्हिच दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज यूजफुल बुझिलो अच्छा मो गोटे क्वेश्चन पचारचे मते को जनरली जदी गोटे मैनेजर जे भी अछि हैला नुआ रे से इंट्रोड्यूस हेछि बट गवर्नमेंट ताको कोन कॉन्ट्रैक्ट देबा को चाहूची तो कैन यू प्रिस्क्राइब मी 2 टाइप ऑफ ऑडिट्स व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर दैट कंपनी very good management audit गोटे second thing is
वेरी गुड मैनेजमेंट ऑडिट बहुत एसेंशियल कहीं से मैनेजर डिसीजन मेकिंग दा एक्सेस करियर अछि फाइन आ गोटे ऑडिट डायरेक्ट क्वेश्चन सेटा वेरी गुड गवर्नमेंट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट इमिति टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर करिया पई तमे रेडी थिबार अछि गवर्नमेंट ऑडिट कोन पई ना जेतु गवर्नमेंट तुमको कॉन्ट्रैक्ट दउची तो गवर्नमेंट असेसमेंट न करके किछि दबन मैनेजमेंट ऑडिट कोन पई ना मु मेंशन करछि कि मैनेजर नुआ रे आसीछि तो देयर मस्ट बी सम एनालिसिस माने ताकू चेक करिया पे आमे गुटे डिपार्टमेंट को रखिबा पे बाध्य कि से ठीक ठाक भाबे डिसीजन मेकिंग करि पारछि ना नै तो इंस्टीट्यूट रो क्वेश्चन लेवल ता एमिति रहिबो बुझना ना नै बियॉन्ड खाली मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स बहुत किछि जिंस अछि तो तमे पढला बेलू मु क्वेश्चन डिस्कस करिवार इंटेंशन होची तमे पढला बेलू से इंटेंशन रे एटा पढियार अछि माने मनर मु कहि देली एबे ऑपरेशनल ऑडिट ए ऑपरेशनल ऑडिट जहां भी अछि जनरली तमे किन पढिबो हां गुटे लॉन्ग क्वेश्चन डे अटेंड करला बेले पढियो बट ए भितरे केते क्वेश्चन सही पारे तमे देखुछ ना आ ए जियोग्राफिकली वास्ट एंटिटीज जहां भी अछि एटा गुटे एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भाबी से पचरी पारियो व्हाई इज ऑपरेशनल ऑडिट सुटेबल फॉर जियोग्राफिकली वास्ट एंटिटीज कोन पे सुटेबल होची कौन पे सुटेबल होची व्हाई इज ऑडिट एसेंशियल फॉर जियोग्राफिकली वास्ट एंटिटीज 3 मार्क्स में जदि पचार कौन लिखिबो वेरी गुड सब एक्टिविटीज कंट्रोल करिया पे सेकंड थिंग एडी अछि आंसर ता या नंबर 1 तमे जोडा कहलो एडा कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी असेसमेंट करिया पे तापरे कोन अलग अलग डिपार्टमेंट जेतो अछि तांकर कोऑर्डिनेशन दा चेक करिबा पे थर्ड थिंग कोन जनरल पॉलिसीज गुटे कंपनी जदि पॉलिसी माने प्रिस्क्राइब करिछि गुटे डिपार्टमेंट आउर डिपार्टमेंट सेटा फॉलो करूछि ना नै आ एडा कोन फोर्थ थिंग होछि प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर टा फॉलो करछि ना नै तो मो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कहि दोछि पॉसिबल क्वेश्चंस राजन जो पचारलो एटा थ्योरी सब्जेक्ट ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो एट द एंड ऑफ द क्लास तू मते कहर अछि कि एटा थ्योरी सब्जेक्ट ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हला एटा को तू कौन नाम दो माने कौन नेम दो इस सब्जेक्ट को क्या नाम दो हला फर्स्ट इज डेफिनेशन डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कौन हला एपिसोड देख लियो ना नहीं पचाच ना कौन वीडियोस देखथियो सरंगरो definition or explanation then in which type of entities is it useful in which type of entities is it useful third thing kona why is operational audit useful or suitable in geographically vast entities geographically vast entities एडार जो 3टा पॉइंट कहली जो नोट रे लिखिला बेलू तमे मो जो हैशटैग मारी एडी लिखी देख वीडियो रे चेकआउट करके भी लिखि पारिबो हैशटैग टू एडी मु लिखुची दिस 4 थिंग्स विल बी द पॉइंट्स दैट बुझला ता अंडर रे लिखिबो तो ऑडिट पढ़िबार अप्रोच टा आई थिंक तुमको एबे बुझा पड़ची मो को अप्रोच टा फॉलो करची मो अगेन कहि दोची जहां भी मटेरियल तुमको एडी प्रोवाइड होची दैट इज बेस्ड ऑन एमटीपी आरटीपी स्कैनर एंड वर्कबुक चारटा जिंस एडा होची कोन हमर उपनिषद सीएमए इंस्टीट्यूट रो उपनिषद एजा सब एजा जे कर देला ऑब्वियसली बहुत भलो मार्क पाइबो ठीक अछि तमरो आ गुट हां मो एडा कंटिन्यू करछि सेकंड थिंग होची मो जेतरो बुझौची मो दीडा अप्रोच रे तुमको लेखौची गुटे होची मो कीवर्ड्स अंडरलाइन करौची गुटे इजी लैंग्वेज रे लेखौची तो तमे पचरी पारिया मते इजी लैंग्वेज आगे एडी लिखि देती तो ही थांदा बट सिमिति लेखिले प्रॉब्लम कोन हबो ना एट प्रोफेशनल लेवल तमे कीवर्ड्स यूज न करले दे आर नॉट गिविंग यू मार्क्स आ एडा मोस्ट ऑफ द पीपल कंसीडर करनांदी कि कहू नांदी हला बहुत प्रॉब्लम फेस करिवो एंड थर्ड थिंग इज लाइक जेतळ को हेइ होची गुटे गुटे जिंस तो हमरो इंटेंशन है कि मोर इंटेंशन है टोटल जिंसटा कवर अप करिया पई जिंस होची जदी एतिकी सरला तो एतिकी रे जेतिकी पॉसिबल क्वेश्चंस हेइ पारिबो सेडार क्वेश्चंस अलोंग विथ आंसर्स डिस्कस हेबार अछि बुझला एडा होची जिंस आ किछि पचारे अछि कागु किछि डाउट्स अछि
एंड एमटीपी आरटीपी जहाँ भी अच्छी दैट इज जनरली नॉट अवेलेबल माने केतळ आम अवेलेबल थाउची केतळ अवेलेबल थाउनी इंस्टीट्यूट मेंबर जे भी अच्छे से एक्सेस थाउची पिलाने बहुत प्रॉब्लम फेस करछन एमटीपी आरटीपी मिलुनी एंड सेडा मिलला परे अगेन तमे फिल्टर आउट केंदी करबो सेडा गोटे जिंस हाँ मु आ गोटे जिंस कहतली कोन ना कोएले सब्जेक्ट तमे एसेस किमिति करबो कि ठीक भाबे चलछि ना नै असेसमेंट करिया पे गोटे आगा प्रोसीजर अच्छी स्कैनर रो पीडीएफ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाउछि आजिकली तो गोटे चैप्टर जेतळ को सरीबो रैंडमली गोटे क्वेश्चन पिकअप करिवो रैंडमली गोटे क्वेश्चन पिकअप करिवो भाबिबो कि एडा मते सडनली एग्जाम रे पळा आसिला तो हाउ एम आई आंसरिंग इट सेडा तमे देखिबो देखिला परे जाय कि आंसर देखिबो कि केते मैच होउछि कइगिरी दिस इज द बेस्ट मेथड मु कहूछि तमे केबेले रिग्रेट करियोनी ए मेथड यूज करिगिरी फाइनल जे एडा यूज हबो दिस इज द बेस्ट मेथड टू असेस योरसेल्फ कि मते जिनसडा बुझा पड़छि एम आई रेडी फॉर द एग्जाम बुझिला ना आउ मोस्ट ऑफ द केसेस रे पिलाने खाली फोकस करछन्ती कोर्स कंप्लीशन ऊपर कोर्स कंप्लीशन अगर हे परने अनफॉर्चुनेटली कार हेले सेडा गुटे जिंस सेकंड थिंग होची कोन रिवीजन तो केबेले करियोनी रिवीजन केबेले करियोनी काहे कि कोर्स सरले पूरा रिवीजन होची आगरे कर देले पाप लागियो बुझिला आ थर्ड थिंग तो राइटिंग प्रैक्टिस सेडा केले करियोनी एबे हम एते बड़ पिला हिला हम कोन लेखियर प्रैक्टिस करू ना कोन जा लगी कि हमरो बहुत मिस्टेक होच आउ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रे कोन तमरा आंसर भूल हेले तमे जानि परछ कि हां एडा आंसर भूल हेछि तो आउ थरे प्रैक्टिस करियो पड़े बट थियोरेटिकल सब्जेक्ट और केस लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स जारे तमे प्रैक्टिस ना करले जानि परिबोनी तो आई थिंक ऑडिट आउ लॉ कि जहाँ भी थियोरी सब्जेक्ट तमे अदर टीचर्स रो पढ़छ सेडार इंपोर्टेंस तमे बुझुछ बुझिला फाइन ठीक अछि थैंक यू सो मच।